Hello everyone. Today we are going to see question number 29 of our NEET mock. Now question number 29 of our NEET mock is telling us which of the following graph correctly represents the variation of EMF and current when 2 microfarad capacitor is attached to an AC source having RMS input of 1.414 milliamperes at a frequency of 50 Hz. Graph are not drawn to the scale. अभी हम लोग क्या किया है, हम लोग को क्वेश्चन दे दिया है और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस में ग्राफ दे दिया है, दैट इज ग्राफ 1 2 3 4। हम लोग को बोला है अगर एक प्योर कैपेसिटर कनेक्ट किया एसी सोर्स से तो उसका फाइनल आउटपुट ग्राफ कौन सा वाला आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा। नाउ हियर आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सेकंड ग्राफ इज करेक्ट। नाउ लेट अस सी हाउ आवर सेकंड ग्राफ इज करेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द ग्राफ इज रॉन्ग। Now moving to the solution, I'm going to say if I'm going to take a pure capacitor में my current always leads my voltage by an angle of pi by 2, means in the case of capacitor my current is leading my voltage by an angle of pi by 2. I'm going to say IRMS is given as 1.414 milliampere. 1.414 is root 2. So I'm getting the value of IRMS as root 2 milliampere. IRMS is equal to I naught upon root 2, that is the basic formula. I'm going to get I naught is equal to root 2 times IRMS, that is equal to 2 milliampere, because root 2 into root 2 is equal to 2. So I'm going to get it as 2 into 10 to the power minus 3 ampere. I got the value of my maximum current. Why I'm calculating my maximum current? Because in my graph I should know the value of maximum current and maximum EMF on which my graph is plotted. Now further, now XC is capacitive reactance. Capacitive reactance is E naught upon I naught is equal to 1 upon omega C. Moving further, E naught is equal to I naught upon omega C. But we do know omega is equal to 2 pi into frequency. I'm going to write I naught upon 2 pi nu into C. I'm going to substitute the value of I naught, I'm going to substitute the value of pi, I'm going to substitute the value of frequency, I'm going to substitute the value of capacitance. Remember capacitance was given as 2 microfarad. अभी इधर हमने क्या किया, 2 into 10 to the power minus 6 farad. We have converted microfarad into farad. On solving this, I'm going to get the value of E naught as 3.18 volt. So the maximum current which I am getting is 2 milliamperes and the maximum EMF which I am going to get is 3.18 volt. For an AC circuit containing pure capacitor, phase of EMF lags behind current by an angle of pi by 2. Now let us see our graph. हम लोग ग्राफ में जाएंगे, अभी ग्राफ में देखेंगे तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट ग्राफ। अभी हम लोग का EMF का वैल्यू कितना आया था, 3.18। अभी फर्स्ट में 3.18 वैल्यू ही नहीं है तो फर्स्ट ग्राफ अपने आप एलिमिनेट हो गया। लास्ट ग्राफ में भी 3.18 वैल्यू नहीं है तो ग्राफ नंबर 4 भी एलिमिनेट हो गया। अभी बच गया हमारे पास ग्राफ नंबर 2 एंड ग्राफ नंबर 3। नाउ इफ यू आर गोइंग टू सी ग्राफ नंबर 2 और 3 का वैल्यू सेम है, दैट इज 3.18 एंड 2। इधर भी अपने पास वैल्यू है 3.18 एंड 2, बट विच ग्राफ इज करेक्ट? हमने क्या बोला, ग्राफ नंबर 2 इज करेक्ट, बिकॉज हमने क्या बोला, इन केस ऑफ अवर प्योर कैपेसिटर अवर करंट लीड्स अवर ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2. So if I'm going to see my graph number 3, in my graph number 3, my current is starting from 0 and my EMF is starting from the maximum value. अब मेरे को पता कैसे चला कौन सा कर्व EMF का है, कौन सा कर्व मेरे करंट का है? Remember, the amplitude of current is always less than the amplitude of EMF. तो इधर हम लोग को किसका लीडिंग दिखा रहा है? इधर हम लोग को लीडिंग दिखा रहा है EMF का। बट इफ वी आर गोइंग टू सी अवर ग्राफ नंबर 2, हमारे ग्राफ नंबर 2 में हम लोग किसका लीडिंग दिखा रहा है? करंट का। बिकॉज इफ आई एम गोइंग टू सी माय EMF इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वैल्यू 0 और मेरा करंट किससे स्टार्ट हो रहा है? पीक वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। सो आई एम गोइंग टू से माय ग्राफ नंबर 2 इज माय करेक्ट ग्राफ। थैंक यू।